The media is full of real estate ads offering plots of land, condominiums, apartments, one-unit houses, holiday homes, farmhouses, commercial spaces, etc., in many locations in the country. The use of AI and digital imagery in these ads mesmerizes the potential buyer. A closer look, though, reveals flaws in planning, design, execution, and delivery. Many schemes are announced for lands that haven't been legally acquired for real estate development. Some years ago, a real estate venture was launched along Karachi's M9 motorway, where legal and administrative formalities for sale were not fulfilled. The matter landed in the Supreme Court, which imposed a hefty fine on the realtor concerned in 2018. Yet, the project is becoming a large-scale enterprise, with its footprints all over the adjacent districts. Islamabad's Capital Development Authority handed over some 190 acres of land in Zone 5 to the Defense Housing Authority in 2007. The DHA was to provide 700 developed plots to CDA in return. The matter remains unresolved. The Eden Housing Society venture is another scam. The commercial enterprise invited people to book plots in its real estate scheme in Lahore. After collecting billions of rupees, it failed to deliver. The matter went to NAB, but only partial relief could be extended to some affected investors. Social justice must be the guiding principle. In many instances, ecological assets are targeted for commercial development. Some years ago, the Pakistan Island Development Authority Ordinance was promulgated. It aimed at creating an authority to transform the Bundal and Bhutto Islands off the Karachi coast into high-end real estate, with $50 billion as potential investment. Due to political friction between the center and the Sindh government, little headway was made, thankfully. Otherwise, an already vulnerable coastal ecosystem would have been completely destroyed. Similar instances are likely to emerge under the reckless move of selling state land reserves to make a quick buck. This is a serious matter which needs a solution before crucial government departments lose all the lands they own. Development of real estate ventures has now encroached on prime agricultural and orchard lands in major cities, including Lahore. A journey along Rai-Wind Road, Multan Road, Ferozepur Road, and other principal arteries towards the suburbs reveals a patchwork of housing estates on farmlands, a pattern found in many other cities where farmland is being ruthlessly usurped for real estate schemes. Reportedly, a realtor is leveling the ground in the peripheries of the Kurthar National Park in the outskirts of Karachi, although the government knows that national parks are meant for the promotion and conservation of indigenous plant and animal habitats. Physical development is strictly prohibited in such locations. If these unregulated practices of unplanned land use conversions continue, the ecological balance will be badly disrupted. Our big cities, including Karachi, have large swathes of land. In many neighborhoods, plots of land were sold more than 20 years ago with no development. The owners are content that their investment is safe. The development authorities are satisfied that they have been successful in carving out profitable ventures from land acquired at extremely cheap rates from the provincial government. But the urban poor, the working-class households and other needy groups that require land for shelter cannot access these expensive land markets. Many government departments have sold or purchased lands in huge quantities. In most cases, the information is kept concealed from society, including certain stakeholders. Many negative outcomes emerge from this peculiar approach. Land use conversions are done without any land use plan. Agencies dealing with infrastructure and utilities are neither consulted nor informed about future land schemes. And all the while, the urban poor are being deprived of opportunities to access land for housing. In sum, no structured criterion is being applied to the opening up of land reserves for sale and development. It is important to note that land is an asset, not a commodity. It must be utilized, keeping social justice as the guiding principle. The continuing sale of land will leave our cities and suburbs short of an asset needed for essential amenities and services. Government departments that own land must act as trustees of this asset.
In order to promote transparency at all stages of functioning, government agencies must endeavor to publish land records that have the necessary information. A scientifically prepared land use policy is needed for the country to preserve its farmlands and orchards, to protect ecologically sensitive locations against depletion, to safeguard sensitive environmental territories, and to thwart man's greed. The writer is an academic and researcher based in Karachi. Published in Dawn, April 10, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. मीडिया रियल एस्टेट इश्तेहारात से भरा हुआ है, जिसमें मुल्क के बहुत से मकामात पर ज़मीन के प्लाट, कंडोमिनियम, अपार्टमेंट्स, 1 यूनिट हाउसेस, हॉलीडे होम्स, फार्म हाउसेस, तिजारती मकामात वगैरह पेश किए जाते हैं। इन इश्तेहारात में मसनूई ज़हानत और डिजिटल इमेजरी का इस्तेमाल मुमकिना खरीदार को मसहूर कर देता है। ताहम करीब से देखने से मंसूबाबंदी, डिज़ाइन, अमल दरामद और तरसील में खामियों का पता चलता है। इन ज़मीनों के लिए बहुत सी स्कीमों का ऐलान किया जाता है जो रियल एस्टेट की तरक्की के लिए कानूनी तौर पर हासिल नहीं की गई है। चंद साल कबल कराची की M9 मोटरवे पर रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया गया था, जहां फरोख्त के लिए कानूनी और इंतजामी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसने 2018 में मुताल्लिका रियल्टर पर भारी जुर्माना आयद किया। इसके बावजूद ये मंसूबा एक बड़े पैमाने पर इंटरप्राइज बनता जा रहा है, जिसके कदमों के निशानात तमाम मुल्हका इजला में मौजूद हैं। इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2007 में जोन 5 में 190 एकड़ जमीन डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के हवाले की थी। DHA ने बदले में CDA को 700 तरक्कियाती प्लाट फराहम करने थे। ये मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। ईडन हाउसिंग सोसाइटी का मंसूबा एक और घोटाला है। कमर्शियल इंटरप्राइज ने लोगों को लाहौर में अपनी रियल एस्टेट स्कीम में प्लाट बिक करने की दावत दी। अरबों रुपए जमा करने के बाद भी वो डिलीवर करने में नाकाम रहा। मामला नैब के पास गया, लेकिन कुछ मुतासरा सरमायाकारों को सिर्फ जुज़वी रिलीफ दिया जा सका। समाजी इंसाफ रहनुमा उसूल होना चाहिए। बहुत से वाक़यात में माहौलियाती असासों को तिजारती तरक्की के लिए हदफ बनाया जाता है। चंद साल कबल पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। इसका मकसद कराची के साहिल से दूर बंडल और बुडो जज़ायर को हाई एंड रियल एस्टेट में तब्दील करने के लिए एक अथॉरिटी तश्कील देना था, जिसमें $50 बिलियन की मुमकिना सरमायाकारी होगी। मरकज़ और सिंध हुकूमत के दरमियान सियासी कशमकश की वजह से शुक्र है कि बहुत कम पेशरफ्त हुई। बसूरत दीगर पहले से ही कमज़ोर साहिली माहौलियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता। इसी तरह की मिसालें फौरी पैसा कमाने के लिए रियासती ज़मीन के ज़खायर को फ़रोख्त करने के लापरवाह इक़दाम के तहत सामने आने का इम्कान है। ये एक संजीदा मामला है जिसके हल की ज़रूरत है, इससे पहले कि अहम सरकारी महकमे अपनी तमाम ज़मीनों से हाथ धो बैठे। रियल एस्टेट मंसूबों की तरक्की ने अब लाहौर समेत बड़े शहरों में अहम ज़री और बागात की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है। रायवेंड रोड, मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर अहम शाहराहों के साथ मुज़ाफ़ात की तरफ सफ़र करने से खेतों पर हाउसिंग स्टेटस के पेचवर्क का पता चलता है, जिसका नमूना कई दीगर शहरों में पाया जाता है, जहां रियल एस्टेट स्कीमों के लिए खेतों पर बेरहमी से कब्जा किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक एक रियल्टर कराची के मुज़ाफ़ात में कैर्थर नेशनल पार्क के अहाते में ज़मीन को हमवार कर रहा है। हालांकि हुकूमत जानती है कि नेशनल पार्क देसी पौधों और जानवरों की रहायशगाहों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ऐसे मकामात पर जिस्मानी नशोनुमा सख्ती से ममनू है। अगर गैर मंसूबा बंद ज़मीन के इस्तेमाल की तब्दीली है कि ये गैर मुनज़्ज़म तरीक़े जारी रहते हैं, तो माहौलियाती तवाज़ुन बुरी तरह मुतासिर होगा। कराची समेत हमारे बड़े शहरों में ज़मीन का बड़ा हिस्सा है। बहुत से मोहल्लों में ज़मीन के प्लाट 20 साल पहले फ़रोख्त कर दिए गए थे, लेकिन कोई तरक्की नहीं हुई थी। मालिकान मुतमईन हैं कि उनकी सरमायाकारी महफूज है। तरक्कियाती हुक्काम इस बात से मुतमईन हैं कि वो सूबाई हुकूमत से इंतहाई सस्ते नरखों पर हासिल की गई ज़मीन से मुनाफा बख्श मंसूबे बनाने में कामयाब रहे। लेकिन शहरी गरीब, मेहनतकश घराने और दीगर ज़रूरतमंद गिरोह
जिन्हें पनाह के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, इन महंगे ज़मीनी बाज़ारों तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। बहुत से सरकारी महकमों ने बड़ी मिकदार में ज़मीनें फ़रोख्त या खरीदी हैं। ज़्यादातर मामलात में मालूमात को कुछ स्टेक होल्डर्स समेत मुआशरे से पोशीदा रखा जाता है। इस अजीब व गरीब नुक्ता नज़र से बहुत से मनफी नताइज सामने आते हैं। ज़मीन के इस्तेमाल की तब्दीलियाँ ज़मीन के इस्तेमाल के किसी मंसूबे के बगैर की जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज़ से मुताल्लिक एजेंसियों से ना तो मशवरा किया जाता है और ना ही मुस्तकबिल की ज़मीन की स्कीमों के बारे में मतला किया जाता है। और हर वक्त शहरी गरीबों को रहाइश के लिए ज़मीन तक रसाई के मौक़े से महरूम रखा जा रहा है। खुलासा यह है कि फ़रोख्त और तरक्की के लिए ज़मीन के ज़खायर को खोलने के लिए कोई मुनज़्ज़म मेयार लागू नहीं किया जा रहा है। ये नोट करना ज़रूरी है कि ज़मीन एक असासा है, न कि एक चीज़। इसे समाजी इंसाफ को रहनुमा उसूल के तौर पर रखते हुए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ज़मीन की मुसलसल फ़रोख्त हमारे शहरों और मुज़ाफ़ाती इलाकों को ज़रूरी सहूलियात और ख़दमात के लिए दरकार असासे से महरूम कर देगी। सरकारी महकमे जो ज़मीन के मालिक हैं, उन्हें इस असासे के ट्रस्टी के तौर पर काम करना चाहिए। काम के तमाम मराहिल में शफ़ाफ़ियत को फ़रोग़ देने के लिए सरकारी एजेंसियों को ज़मीन के रिकॉर्ड शाये करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें ज़रूरी मालूमात हों। मुल्क के लिए अपने खेतों और बागात को महफूज रखने, माहौलियाती तौर पर हसास मकामात को कमी से बचाने, हसास माहौलियाती इलाकों की हिफाजत करने और इंसान के लालच को नाकाम बनाने के लिए साइंसी तौर पर तैयार करदा ज़मीन के इस्तेमाल की पॉलिसी की ज़रूरत है। मज़मून निगार कराची से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर तालीम और मुहक्किक हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 10 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.